so today we are going to begin with the lesson number 5, that is HTML5 images, links and tables. How to add the images, text, links and tables in the HTML5. So as you all know, we have learned how to make web page using HTML5 scripting language. We can also add images to our web page. हम add कर सकते हैं images अपने web page पे जिससे वो बहुत ज़्यादा attractive लगे. Images include photographs. इसमें photographs होती है, logos होते हैं, visual objects होते हैं that can be added to a web page. Let us learn to insert links and tables in the web page in this chapter. So, images in web pages. A web page can also display drawing, painting or art. क्या display कर रहा है? Drawing हो गई, painting हो गई, art हो गई. We can also display our favorite artwork. हम अपना favorite artwork भी display कर देते हैं web page पे. Images can be used as navigational tool to help readers browse through a web page. ये navigational tool की तरह help करता है reader को browse करने के लिए web page पे. We can add image to improve the appearance of our web page. हम image add कर सकते हैं जिससे appearance अच्छा लगे हमारे web page का. Many websites offer free images. बहुत सारी websites free images offer करती है that can be used for web pages. We can scan photographs. हम scan कर सकते हैं photographs को, logos को, drawings को. Help से scanner की and then add कर सकते हैं scan images को अपने web page पे. Arrange or ready-made images available to at computer stores. हम arrange कर सकते हैं ready-made images को जो available होती है हमारे computer stores पे. Computer stores which include cartoons होते हैं, drawings होती है, photographs होती है और arts होते हैं. Make sure that these images are in the format that web browser can display. इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपका image उस format में हो जो web browser display करे, जैसे JPEG हो गई, Joint Photographic Photograph, और GIFs हो गई like Graphic Interchange Format, and PNG Portable Network Image Graphics. We can create our own images. हम अपने images create कर सकते हैं that best suits our web page with the help of an image editing program like Adobe Photoshop, GIMP and Adobe Paint Photoshop Pro. Now let's talk about fact folder. We should store all our web pages and images in one folder in our computer. हम अपने सारे हम store करने चाहिए सारे web pages को, images को अपने एक folder में computer पे. If the folder contains many files, अगर folder में बहुत सारी files होती है, we can store our images in a sub folder. हम अपने images को store कर सकते हैं sub folder में. If an image that we want to add to a web page is stored, अगर कोई image जो हम add करना चाहते हैं अपने web page वो stored है same folder में as web page, हम specify करते हैं just the name of image like robot.jpg. Now let's talk about inserting images. Images को कैसे insert करते हैं? We can add an image to a web page to illustrate a group. Image is the short form of img. किसकी short form है? Image की short form होती है. This used to include image in our HTML document. किस लिए यूज होते हैं? ऐड करने के लिए image हमारे HTML document में. The image tag incorporates graphics in the HTML document. It is an empty tag. ये empty tag होता है जिसमें क्या होता है? 5 attributes होते हैं like align, src, height and width. So align क्या होता है? Is used to align an image. एक image को align करने के लिए web page पे left, right, top, middle and bottom. Alt क्या है? ये specify करता है alternative text should be displayed if a selected image is not displayed. src is a source of image file. It simply specifies the URL. ये specify करता है URL that is uniform resource locator of the image. Height ये specify करता है आपकी height image की in pixels. Width ये specify करता है width of an image in pixels. Syntax क्या होता है इसका? Image src is equals to align all height width. Now follow the steps to insert the image in a web page. कैसे insert करते हैं image एक web page में? First आपको place करना है cursor at the desired place to insert the image. Then type करना है आपको image src. Now replace करना है with the name of the image file. The web browser display करेगा आपका image of our web page. Now specifying the size of an image. कैसे specify करते हैं size हम अपनी image का? The size of an image on a web page can be increased or decreased. Increase भी हो सकता है, decrease भी हो सकता है. Specify करके new width and height for it. We can set the width and height of an image in pixels. हम pixels में set कर सकते हैं percentage of the overall window size. Follow the steps to change the size of the image. कैसे image का size change करते हैं? First आपको click करना है inside the image tag and type करना है आपको width. Here then
replacing with measurement to be set, then give a space by pressing the space bar की, वहाँ पे आपको space डालना है, space bar की को press करके here, then type करनी है आपको height, here आपने यहाँ पे height type करी, replacing with the question mark with the height, question mark को replace करना है आपको height से, measurement to be set. The image with the new size appears in the web browser. जो image है new page new size, the image with the new size, जो image है new size की appear हो जाएगी आपकी web browser पे. Centering an image in the web page. जो center कैसे center करते हैं image एक web page पे? We can align the image to the center, which would enhance the appearance. जो enhance करेगी appearance आपके web page के. To do so, follow the steps. First आपको circle type करना है center in the front of the image. To back to the center, then type करना है आपको center यहाँ पे at the end of the image tag. Now the image appear हो जाएगी आपके align में on the web page. Aligning image horizontally कैसे align करते हैं? We can use the left and right alignment attributes to control the horizontal positioning. Horizontal positioning को ध्यान रखते हुए कंट्रोल करने के लिए of an image on the page. These attributes also control how text wraps around the image. कि text कैसे wrap होगा image के आसपास. Follow the steps to horizontally align the image first. आपको टाइप करना है align left in the image tag of the image to wrap the text around the right of the image. Then the image align करेगी left with the text wrapping around it on the right. After that, now let's talk about wrapping text between two images. दो images के बीच में कैसे wrap करते हैं? We can wrap text between two images, one image at the left, another at the right. Change layout of our web page. Follow the steps to wrap text images. First आपको टाइप करना align is equals to left in the image tag of the image appear हो जाएगी अपनी left side में. In the image tag for the image to appear on the right side of text टाइप करना है आपको align is equals to right. The text wrapped around the two images appear in the web browser. कहाँ पे appear हो जाएगी? वो web browser में appear हो जाएगी. Left और right के बीच में आपका text आ गया. Now adding borders to an image. Borders कैसे add करते हैं image पे? We can add a border to an image to make it stand out. So stand out करे web page पे. We can even define the thickness of the border in pixels. हम thickness भी define कर सकते हैं border की pixels पे like this. So follow the steps to wrap the text between images. So in the image tag for the image, display a border. Type करना आपको border. यहाँ पे border type करने is equals to question mark replacing करना आपको question mark thickness of the border के साथ to be used in pixel. Then image the image is displayed with a border around it. Image होगा जो डिस्प्ले हो जाएगी बॉर्डर के साथ. Now we can also remove the existing border. जो existing borders है उनको remove भी कर सकते हैं हम with the number 0. For example, image src robot jpg border is equals to 0. हमने border remove भी कर सकते हैं. Now let's talk about list and HTML5. Lists are used to present list of information in well form and structured way. किसने यूज होते हैं प्रेजेंट करने के लिए इंफॉर्मेशन की well form and structured way में. Three different types की लिस्ट होती है HTML and each one has specific purpose. और हर किसी का specific purpose होता है and meaning होता है. Unordered list. It is used to create a list of related items. इसलिए यूज होता है create a list आपके related items एक particular order में. Order list ये होती है create करती है list आपके related items की specific order में. And description create करती है list आपकी terms and their descriptions के साथ. Fact folder inside a list item we can put text. हम text put कर सकते हैं images, links, link, line break, etc. हम put कर सकते हैं. We can also place an entire list inside a list item. Entire list को भी place कर सकते हैं वो list item में to create the nested list. Now let's talk about creating a bullet or unordered list. Bullet या फिर unordered list को कैसे create करते हैं. So an unordered list is created using UL element. UL element को use करके होता है and each line list item starts with li. इससे start होता है आपका less than more than के साइड के साथ बीच में li होता है element. So the list item in unordered list are marked with the bullets. किससे marked होती है? Bullets से marked होती है. These are the bullets. Bullets are used to list the content in such a way that it looks unorganized.
सॉरी इट लुक्स मोर ऑर्गेनाइज, जिससे बुलेट्स है ये ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड लगे। सो बुलेट्स आ गए यहाँ पे हमारी। सो द टाइप यूएल टाइप करना बिफोर द लिस्ट, टाइप करना है आपको li इन द फॉर्म ऑफ ईच आइटम इन द लिस्ट, देन टाइप करना है आपको ul at the end of the list. So the bullet ul in the unordered list, the end of the list, the bullet unordered list is displayed by the web browser in the style we have selected. A bullet appear in the front of each item, bullet appear हो गई हर आइटम के फ्रंट पे। In this example the bullet list uses circular bullets है यहाँ पे हमारी। Fact folder, we can change the style of an unordered list, हम style change कर सकते हैं unordered list की। We can place circle, हम circle place करेंगे, square और disk in place of bullets. For example, you will type circle for solid color bullets, you will type square for solid color bullets, etc. Now creating a numbered or unordered list, number या फिर ordered list को कैसे create करते हैं? An ordered list is creating using OL को यूज करके क्रिएट हो सकती है ऑर्डर लिस्ट, दैट इज एलिमेंट एंड ईच लिस्ट आइटम विद द li, दैट इज लिस्ट एलिमेंट। द लिस्ट आइटम इन ऑर्डर लिस्ट आर डिस्प्लेड इन स्पेसिफिक ऑर्डर, डिस्प्ले होती है स्पेसिफिक ऑर्डर में, जैसे आपको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हो गए, टेबल ऑफ कंटेंट। सो फॉलो द स्टेप्स टू क्रिएट अ नंबर और ऑर्डर लिस्ट। फर्स्ट आपको फिर टाइप करना है ग्रेटर देन लेस देन का साइन बीच में OL बिफोर द लिस्ट, देन टाइप li इन फ्रंट ऑफ ईच आइटम इन द लिस्ट, देन टाइप करना है आपको OL एट द एंड ऑफ द लिस्ट। Now the numbered or order list is displayed in the desired style, जो number है order list की display होती है आपकी desired style में by the web browser. A number appears in the front of each item, एक number appear होता है front में each item के in the list. In this example the list uses number rather than letters. इसमें क्या हुआ है, हमने bullets की जगह हमने letters की जगह numbers यूज करें। Fact folder, we can change the style of an order list, हम style change कर सकते हैं order list का। For example in place of number हम लिख सकते हैं alphabets, Roman numerals etc. For example, OL is equals to A और ABC style codes, OL टाइप कर सकते हैं ABC small letters में भी style code, और OL टाइप Roman numbers यूज कर सकते हैं 1 to 3 style codes, OL टाइप 1 for 1 to 3 style codes etc. Now let's talk about creating our description list. कैसे create करते हैं? Our description list is a list of items with a description or definition of each item. किसके साथ? description या फिर definition of each item. The description list is created using DL element. DL element को use करके create होता है. The DL element is used in conjunction. किसके से use होती है? conjunction with the DD element which specify a term. क्या specify करता है? term and the DD element which specify the term definitions. So browser usually render the definition, क्या करता है? usually render करता है definition list by placing the terms and definition in separate lines where the terms definitions are slightly indented. Follow the steps to create description list. First आपको type करना है DL before the list, then type करना है DD in the front of each item in the list and DD at the end of each item. Then type करना है आपको DD type करना है in the front of each definition for that particular item, then DD at the end of the definition, and type करना है आपको DL at the end of list. The description list is displayed by the web browser. The term with its definition displaying separate, जो term में display हो रहा है उसकी separate list में। Now creating links in web pages. Web pages में links कैसे create करते हैं? So web pages can be connected to another by creating a link or hyperlink. दूसरे से link हो सकते हैं web pages अगर create करके link या फिर hyperlinks को। Link क्या करते हैं? Enable करते हैं user को navigate करना from one topic to the next of the web on a website, or from one website to another, या फिर एक website से दूसरी website पे। The user click the link, user click करता है उस link पे and browser open कर देता है उसकी destination page को, उस link वाले page को। Link can be text and or image, text का and हो सकता है, image हो सकती है, the text भी हो सकता है, image भी हो सकती है आपका link। text links typically appears as underlined appear होता है text link different colored words में in on web page. If any one web page has a link, अगर किसी एक पेज पर है any one or image, if any image on a web page has a link, अगर किसी image पे web page पे link है, so it appear होता है when a user places the mouse over it, जब user क्या करेगा mouse लग रखेगा उस पे, the pointer take the shape of a pointer hand
इंडिकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ एन एक्टिव क्लिकेबल लिंक। वहां पे क्या दिखा था कि प्रेजेंस है यहाँ पे कोई क्लिकेबल लिंक आपका। लिंक्स दो तरह के होते हैं, इंटरनल लिंक। इंटरनल लिंक क्या होता है? अदर लिंक्स टू द पेजेस विद इन अ वेबसाइट, जो आपकी वेबसाइट के अंदर होता है। These links can be either absolute or relative। Absolute भी हो सकते हैं, relative भी हो सकते हैं। Web address or the web pages such as http www.graphiczone.in is included in absolute link। किसमें include होता है? आपके absolute link में include होगा। Relative links locate web pages within the same directory। Locate करते हैं web pages को same directory में। A subdirectory that can be defined from the current position such as store books .html anchors are links to sections within the same page। ये same page पे link होता है। These can also be created using a tag। ये a tags के यूज करके create कर सकते हैं। External link क्या होता है? जो वेब पेज से बाहर होते हैं। External links are the links outside the currently open website। जो आपने वेबसाइट करनी ओपन करी उसके बाहर है। These links must always be absolute। हमेशा absolute होनी चाहिए। And absolute links can include a protocol। इसमें प्रोटोकॉल होती है जिसे आप बोलते हैं HTTP। So a domain name such as www.graphiczone.in and a file name। एक file name भी होता है। Each directory is an absolute link। हर एक directory absolute link है। So separate होती है /sig। / symbol आता है वहाँ पे। For example, creating a link for the Graphiczone homepage, we will write। हम क्या लिखेंगे? href is equals to http://www.graphiczone.in। Click here to visit Graphiczone homepage। Now here href क्या है आपका? hypertext reference from where the link will take us to। लिंक हमें यहाँ से कहाँ लेके जाएगा? anchor links A and/A are used to start and end the entire link। इसलिए उसको start करने के लिए और end करने के लिए entire link command को। Now creating text link। text link को कैसे create करते हैं? We can create a text link in a web page when it is clicked, it takes the visitor to another website। जब हम इस पर क्लिक करेंगे वो visitor को दूसरी वेबसाइट पे ले जाता है। Follow the steps to create a text link। First आपको टाइप करना है desired text for visitor to click on in order to display another web page। Then आपको टाइप करना है @href क्वेश्चन मार्क की जगह in front of क्वेश्चन मार्क टेक्स्ट रिप्लेस कर दे, टेक्स्ट डाल देना है। द एड्रेस डालना है आपको वेब पेज पर डिस्प्ले होने के लिए। टाइप करना है आपको a at the end of text। The text link is displayed। text link display होगा and appear होगा colored and underlined in the web browser। And we display the mouse pointer on the link। जब हम डिस्प्ले करेंगे माउस पॉइंटर को लिंक पे, the link web address is displayed on the bottom of the browser window। When the visitor select on clicks on the link, the specified website will open। जो specified website है वो ओपन हो जाएगी जब visitor उस पर क्लिक करेगा। Broken links are the links that do not work। broken links होते हैं वो work नहीं करते because the destination has been deleted। वो destination delete होता है और the path has been changed या फिर उसका path change होता है। hotspot is a defined area of on an image। hotspot क्या होता है? defined area होता है आपकी image पे जो कैसे act करता है? hyperlink की तरह act करता है। Now creating a link to an image। कैसे create करते हैं एक link आपकी image में? So images can be created as a hyperlink to open an image। images create हो सकती है hyperlink में open करने के लिए वेबसाइट को। If we wish to display a large number of images on our page, अगर हम डिस्प्ले कर रहे हैं large number of pages अपने इमेज पेज पे, हम क्रिएट करेंगे link to an image so that the visitor can click। जिससे visitor क्लिक करेगा उस पेज पे डिस्प्ले होगा लिंक another पेज का इमेजेस के साथ। But putting a large number of images, अगर हम large number of images डालते हैं सिंगल वेब पेज पे, वो इंक्रीज करता है उसकी ओपनिंग टाइम को। So in that case we can display the images। हम images को display करते हैं small size में on a page and create the hyperlinks to their larger sizes। Follow the steps to create a link to an image। An image at the image location at the visitor to select the display the linked image। Here type करना है आपको href in the front of image replacing with the address of website to display। type करना है आपको at the end of image। The web browser display the link on the image। while web browser क्या करेगा? डिस्प्ले करेगा लिंक आपकी इमेज पे। when the mouse pointer is placed on the image, जब आपका माउस पॉइंटर प्लेस है आपकी इमेज पे, the link web address is displayed in the status bar। जो लिंक वेब एड्रेस होगा डिस्प्ले होगा आपके स्टेटस बार में।
तो विजिटर क्लिक करेगा आपके लिंक पे, द स्पेसिफाइड वेबसाइट आपके सामने अपीयर हो जाएगी। Now let's talk about fact folder. We can create a link that allow visitor to send us an email message. हम create करते हैं link जो allow करते हैं visitor को send करने के लिए email message directly for queries and feedbacks that can help further to improve our website. Type a href and ml question mark in the front of text or image replacing with the email address. वहाँ पे आपको email address डालना है mail to की जगह आपको email address डालना है क्वेश्चन मार्क की जगह जो रिसीव यहाँ पे आपको ईमेल मैसेज चाहिए फॉलोड विद a/a एट द एंड ऑफ टेक्स्ट और इमेज। क्रिएटिंग टेबल्स इन वेब पेज। टेबल्स कैसे क्रिएट करते हैं वेब पेज पे? HTML tables enable us to effectively present large volume of data in rows and columns. हम large volume of data को rows और columns में ऐड कर सकते हैं। They are commonly used to display tabular data. हम ये किस लिए यूज होता है? टेबुलर डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, प्रोडक्ट लिस्टिंग हो गया, कस्टमर डिटेल्स हो गया, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हो गया एंड सो ऑन। वी कैन आल्सो यूज टेबल्स टू ऑर्गेनाइज द ओवरऑल स्ट्रक्चर। हम और यूज कर सकते हैं टेबल्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज। फॉर एग्जांपल वी कैन क्रिएट अ टू कॉलम टेबल को क्रिएट कर सकते हैं जो ऑर्गेनाइज करता है लिस्ट ऑफ नेविगेशनल लिंक्स इन वन कॉलम and the main text or image content in another. The places where the columns and rows intersect, जब rows और column intersect करती हैं अब उनको हम सेल्स कहते हैं। Each cell can hold web page, और सेल क्या करता है? होल्ड करता है वेब पेज कंटेंट को, लिंक को। Using HTML or attribute, we can set the size. हम सेट करते हैं साइज ऑफ एन एंटायर टेबल as well as the size of particular cells. A table can be created using a table tag. Inside the table tag, one can use tr. क्या यूज कर सकता है? tr tag को यूज कर सकता है define a table and the td tag define करने के लिए table data और cell content. A cell can be defined as, cell को कैसे define करते हैं? header or a group of tables, cells, table cells, th tag. In addition to these codes, we can assign caption. अब captions assign कर सकते हैं, column groups भी। we can also create tables. हम tables create कर देंगे tables पे within table and call उसको हम क्या कहते हैं? nested tables कहते हैं। Look at the basic table structure. ये basic सा table structure है, table tr is the basic table structure. Now attributes associated with table tags. क्या क्या attributes associated है आपके table tags से? Summary border with border color, bg color align. So what is summary? It defines a text string that gives a brief description of the table. जो brief description देगा table का। Border, it specifies the width of a border around the table in pixels. ये specify करता है width आपके border का around the table in pixels. Width, it specifies breadth of the table. ये specify करता है breadth table की the border in the browser window. Width attribute can be set to a specific number of pixels or to a percentage of available screen width. Border color, it specify a color. ये specify करता है color for the table border as the RGB number or a color name. BG color, it specify a color for the table background. Specify करता है color table background के लिए as the RGB number or a color name. Align, it is used for aligning the content. इसलिए यूज होता है align करने के लिए content एक individual cell में and table में अपने आप। In horizontal alignment, the header is aligned across the width. Header align होता है across the width of a cell or table with align attribute. To be set at equal to left, right or center. In vertical alignment, the content is aligned between the top and bottom content. Align with the top में and bottom of the cell में. Vertical alignment of cell content is controlled by settings. ये किससे control होता है? Setting करके V align attribute को top में, middle में या फिर bottom में। Now creating a table, कैसे create करते हैं table को? We can create a table to display information in tabular format. Display करने के लिए information को किसमें? tabular format में, rows में और columns पे। We can also use tables to present information in columns like those found. जैसे columns आपके newspaper में आते हैं और magazines में आते हैं। Follow the steps to create a table. Type the data to appear in the first row of the table. आपको data type करना है जो appear होगा आपके first row of the table में। Then we can use tab keys to separate the data. Tab keys को use कर सकते हैं separate करने के लिए data of each cell. The web browser भी ignore the spacing we add. Web browser जो होगा space को ignore कर देगा जो हम add करेंगे। Type करना है आपको data जो appear होगा आपकी next row में और table repeat करना है इस step को जब तक आप entire data add ना कर दो अपनी table के लिए। Then type करना है आपको table
बिफोर द टेक्स्ट एंड टेबल एट द एंड ऑफ द स्लैश टेबल डालना आपको एंड में टेक्स्ट के। सो टाइप करना है आपको tr बिफोर द टेक्स्ट एंड स्लैश tr एट द एंड ऑफ द टेक्स्ट for each row in the table. Then you have to type th in front of the text and slash th at the end of the text for each header cell. Now type करना है आपको td in front of the text and slash td at the end of text for each data cell. Now the web browser display कर देगा आपकी table. Now adding borders to table. Borders कैसे ऐड करते हैं टेबल को पे? Table does not have any border by default. टेबल में अपने आप कोई border नहीं होता default से. We need to add a border. Border ऐड करना होता है टेबल में. Separate each cell in the table using borders. Attribute border attribute को use करके which makes it readable. We can define the thickness and borders in pixel. हम define कर सकते हैं thickness और border किसमें? Pixels में. Follow the steps to add a border to the table. In the table tag type border. आपको border type करना है. Replacing होगा question mark with the thickness of the border. यहाँ पे question mark की जगह आपको thickness डाल देंगे अपने border की, like 10 डाल दिया आपने यहाँ पे. तो web browser ऊपर display कर देगा border आपकी table की. Table border के साथ आ जाएगा. Now spanning cells. What is spanning cells? Spanning cells also called merging cells. इसका मतलब होता है merge करना cells को. Are mainly used to display a title across the top or down. ये mainly किस लिए यूज होता है? डिस्प्ले करने के लिए title top में या फिर down side of a table. We can merge two or more cells. हम दो या more से ज़्यादा cells को या rows को merge कर सकते हैं. एक to make one large cell, एक बड़ी cell को बनाने के लिए. The attribute called span. How many across are row and row span. How many down. Call span means how many across और row span means how many down. Indicate करता है columns and rows एक cell में should take up. कि कितने cells, कितनी rows और columns एक cell लेगा. Follow the step for spanning cells across columns. First आपको क्या करना है? In the th और td tag for the cell to spanning across columns type करना है आपको. Call span is equals to जो भी होगा question mark की जगह replacing किस करना है आपको number से वो question mark for the cell to span across. Now the web browser span the cell across the number of columns specified. Follow the steps for spanning cells across rows. In the th or td tag for the cell to spanning across rows type करना आपको row span replace करते हुए number से जो question mark को replace करना आपको number of rows से for the cell to span across. कितने number of rows जाएगी? Like 5 गई. The web browser spans the cell across the number of rows and rows specified. Now adding background color to a tab. कैसे add करते हैं background color आपकी tab में? We can add background color to a table to emphasize important information. Emphasize करने के लिए important information or to make it presentable. जिसको presentable लगे. Background color can be added to a cell. कैसे add कर सकते हैं? Cell में row में to an entire table में भी accordingly add कर सकते हैं. To do so follow some steps. So for the specifics area to show background color, place the cursor in the tag. आपको place करना है cursor को tag में. For the cell th or td, row, tr or table to add colors to. Type करना है आपको bg color replace question mark with the replacing with the name or color code of the color to use. For example, to apply yellow color to row in the tr tag type करना है आपको bg color. Hashtag FFFFO00000. The web browser display कर देगा color, cell, row और entire table in the color specified. जो आपने color specify करा उसमें आ जाएगा cell, row या पूरी की पूरी clear column आपकी. Now cell padding and spacing. What is this? So the web browser display करता है designating amount of space between the cell content. कितना चाहिए आपको space cell content पे and the cell borders में is called cell padding. इसको cell padding कहते हैं जो space आता है cell content में और cell borders में. Where as the cell spacing among border is called. जो cell spacing होती है borders में उसको हम cell spacing ही कहते हैं. We can add padding to add space between the borders. हम padding add कर सकते हैं space add करने के लिए border में and content of a cell में. We can use spacing to increase the border size. हम use कर सकते हैं spacing को border size को increase करने के लिए, distance increase करने के लिए between cells.
These sizes are measured in pixels. किसमें measured होते हैं ये sizes? Pixels में. Follow the steps to add space between cells content and cell border in the table tag. टाइप करना है आपको cell padding, क्वेश्चन मार्क की जगह आपको डाल देना space like 10. So replacing with the pixel, क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करना है आपको पिक्सल वैल्यू से. टाइप करना है आपको सेल स्पेसिंग, क्वेश्चन मार्क को फिर से रिप्लेस करना है आपको पिक्सल वैल्यू से साइन करने के लिए. द डेसिग्नेटेड अमाउंट ऑफ स्पेस बिटवीन द सेल कंटेंट एंड द सेल बॉर्डर इज असाइंड. वो असाइन हो गया यहाँ पे. सो ये सेल स्पेसिंग है, ये आपका सेल पैडिंग हो गया. So that's all for this lesson. I hope you all like the explanation of this lesson. Thank you and have a good day.